May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah, please have a seat, Thank you, Pratham. Pratham, can you please introduce yourself? Yes, sir. Sir, my name is Pratham Ratnakar. I am 21 years old. I belong to Kanpur district of Uttar Pradesh, from where I have done my schooling and graduation. That is BA in Sociology. Sir, my interest includes playing acoustic guitar, and this is my first attempt and first interview. Okay, fine. Pratham, you are from DAV College. Yes, sir. Can you briefly explain history of these schools? So basically, sir, DAV College, continuing the legacy of the Arya Samaj, which was founded by the Dayanand Saraswati way back 1875, and this DAV College network started after his death, 1870s. The first DAV College was established in Lahore, and in Kanpur it was established in 1919 with the effort of Lala Diwan Chand. Sir, Okay, can you briefly explain the contribution of Swami Dayanand Saraswati for Indian history? yes, sir. Sir, Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj in 1875, and he tried to reform the religious mentality of that particular point of time, 19th century. A lot of ills which were engulfing the Indian society at that particular point of time. So he also tried to done away, and he asked the nation to go back its roots in terms of religious practices. That is what. Don't you think if we go back to ancient times, are we turning our clock back? So basically, I think when Dayananda Saraswati says we need to go back to Vedas, he basically means in religious terms. Dayananda Saraswati accepted the modernity as the DAV network of colleges also supporting the modern education, side by side the religious education. And basically, he was more sort of religious mentality he was talking about, that ills he was trying to done away, not in in its entirety sense, going to back to Vedas. Evils means, can you explain with some examples? Yes, sir. Sir, for example, sir, the sati practice which being developed by the society and rituals which being developed by the society. So he wanted to done away from that rituals. That's why he's saying back to Vedas. Okay. Your university also Chhatrapati Shahuji Maharaj. Yes, sir. Can you explain who is Shahu? Sir, Chhatrapati Shahuji Maharaj was the Chhatrapati of the Maratha dynasty, and he became Chhatrapati in around 900, and he was also a keen social reformer. He introduced some social reforms such as reservation. He was the first person who introduced reservation in the India. Apart from that, sir, he is also tried his best to remove the untouchability, as he took food from untouchables. So he did a lot for the social cause also. Okay. In 1857 revolt, Sir. what is the who were the leaders near Kanpur region who fought against British? Sir, in 1857 revolt, Nana Sahib was the leading person from the Kanpur. He was basically the Peshwa and son of Baji Rao II. And Tatya Tope was also there, who is helping Nana Rao. Apart from that, so these are the basic personalities from Kanpur, specifically I am talking about. All right. So, can you briefly explain Kanpur geographic location? How significant Kanpur? Yes, sir. So geographically, Kanpur is very significant, and it has been significant geographically since time immemorial. As we see, Kanpur connects the Bundelkhand region from the we can say Awadh region. So that is something which is very significant. Apart from that, since Kanpur is a major industrial town, its various infrastructure routes also passes from Kanpur, such as National Highway 19, which passes from the Kanpur. It connects Delhi to the Kolkata. Apart from that, we see National Highway 25. It also passes from Kanpur. It connects it to the Lucknow, and since it's also connected with the Bundelkhand region, so it's also important for Bundelkhand development. Bundelkhand location is in which state? So Bundelkhand basically the districts such as Jhansi, Chitrakoot I'm talking about, sir. Okay. Can you highlight some of the challenges faced by Bundelkhand region? So basically Bundelkhand facing challenges such as since it's a dry region, so agriculture challenges are always there with the Bundelkhand. Apart from that, the rivers which are flowing in the Bundelkhand region, they are dry in very dry season, such as the Ken, Betwa. So this is the main challenge which Bundelkhand is facing, and industrial development is also very less in the Bundelkhand.
So basically, these are the challenges which Bundelkhand is facing. But now, due to the efforts of the government, UP government, various efforts have been taken, such as the establishment of BIDA, Bundelkhand Industrial Development Authority. So it's focusing on the development of the Bundelkhand region. Apart from that, the Cane Betwa linkage program, it's also there. And now defense corridor has also started in the Bundelkhand region, connecting the Jhansi, Chitkut. So that is something the Bundelkhand development is there. Okay. What are the environmental challenges faced by Cane Betwa linkage project? Sir, when these projects are being announced, of course, environmental challenges are there, as we are trying to create some sort of artificial intervention in the geography. Challenges can be, sir, it may affect the marine ecosystem of that particular river, because the diversion may lead to water scarcity in another river. So that can also be the reason. Apart from that, another important challenge can be basically, sir, sand mining can also be developed in that particular region. If we are connecting, linking the things, then that can also create some sort of issues. So basically, this is I am able to think right now, sir. Okay. Thank you, Pratham. Thank you, sir. Okay. You're from Kanpur. So in Kanpur, there is Asia's largest drain. Can you name that drain? Sorry, I'm not able to. Okay. Your hobby is playing guitar. Yes, sir. Can you tell me the difference between acoustic guitar and electric guitar? Yes, sir. Basically, the guitar of three types: the acoustic guitar, semi-acoustic guitar, and the electric guitar. When acoustic by its very definition means something which is very hollow, so that is acoustic guitar. And if we see the electric guitar has a solid body. It's not a hollow object. And in electric guitar, there is also one thing which is very important, and that is the external amplification is required while playing. In acoustic guitar, no external amplification is required. It's more simple and stylish as well. Why it is not required in acoustic guitar? Basically, acoustic guitar is hollow, so just the volume passes through by being hollow object. What is the concept of physics that is involved here? I believe rhythm of sound, something like that. I will do. Can you tell me the pitch of a guitar string depends on what factors? The points I am able to think right now is I believe its body. For example, the shape of the guitar is something which is very important in its pitch. When it comes to acoustic guitar, there is cutaway guitar, broad net guitar. So if we see broad net guitar, its body become some sort of large. So then sounds will echo more compared to the cutaway guitar. I believe these are the, and strings, use of strings can also be there. For example, sir, acoustic guitar can be of two types: the classical guitar and the guitar which use steel strings. In classical guitar, nylon strings are used, so it will have less pitch, ma'am, compared to the string. Okay, Pratham. Can you tell me how is the concept of standing wave related to guitar strings? I'm sorry, I'm not aware about standing wave. Okay. You have studied sociology. Yes, ma'am. Can you tell me what is the psychological impact of patriarchy on men? Ma'am, patriarchy has basically existing since time immemorial, cutting across all the societies, Eastern and Western. And ma'am, it's impacting to the men, such as men are considering themselves superior, both biologically as well culturally. That is something which is a major impact among the men, which is a falsified notion. Apart from that, it is also leading to objectification of the woman. That's something which is also happening. And also it psychologically impacting the men that they are the sole bread earner. So that economic angle is also always there among the patriarchy. So how can we dismantle patriarchy? basically, patriarchy is a deep-rooted notion in society. So it requires a multi-pronged approach if you want to done away with it. So the process should be start from very basic school trainings. The value education should be there in school, which has been now with a part of under the NEP 2020. And apart from that, I believe that dynamic parenting is required. Parents should also be act as a role model in front of their children, because that notion in family also get entrenched into the minds of the student. So that's also very important. Apart from that, the leadership role should be there. For example, ma'am, just in 26 January parade. Now this time the parade will be led by the women officers. That's something which can be echoed in the whole nation. Like it's a great event, and
So that's something which can be impact the whole nation Okay. in a short time. Okay. So, Yes, so Pratham, you come from the state of Uttar Pradesh. Yes, sir. Can you please tell me three unique features of the state of Uttar Pradesh? Sir, economic wise, Uttar Pradesh is second largest economy, surpassing the Tamil Nadu, and now it's become $310 billion economy. Apart from that, sir, Uttar Pradesh is also the most populous state of the nation, so it has a lot of potential when it comes to the workforce and youth. Apart from that, Uttar Pradesh has a lot of rivers. It's a state of rivers, the Ganga, Yamuna, and all that. So I think these are the three. Okay. Can you compare between the East UP and West UP? Sir, basically, sir, the East UP is considered to be some sort of backwardness compared to the Western UP due to various reasons, such as Eastern UP is more towards the agriculture activities, and Western UP is more industrialized due to this closeness to the NCR region and all that. And apart from that, Eastern UP is more, I can say, is engulfed in the lower end of crops, while Western UP is growing some sort of high value crops like sugarcane and all those things. Apart from that, ma'am, Purvanchal UP is a region where people are migrating from Purvanchal UP, so it's something which is there, and Western UP people are migrating into, so that's also the reason. Okay. How is the status of law and order currently in the state of Uttar Pradesh? Sir, law and order has improved very significantly in the Uttar Pradesh since last 6 to 7 years, since government is following zero tolerance policy. So it has improved the law and order of the state very significantly, sir. For example, sir, if we see the data, the conviction rate in Uttar Pradesh is 60, which is double the national average, that is 30. Apart from that, sir, if we see the crime rate has also declined very significantly. So crime and law and order is becoming very vigilant in the state. And the Uttar Pradesh, which has earlier a very infamous image of being a communal tension prone state, now it's very improved. And if we see the NCRB data, in 2021, only one communal tension was there in UP. And if we see the data 2022, it's nil. No communal tension was recorded in UP. So crime and law and order. You are saying there is no communal tension, Yes, but sir. the nature of communal tension is now changing. You see the incident of Sambal. Even though two communities were not against each other, but somehow it involved the minority community. So what is your opinion on the issue of Sambal? How the things turned out, and what is your overall perspective? How do you see that event? So Sambal event was basically an event of communal clash, which was contained by our administration very vigilantly. I believe that issue was basically revolved around the religious polarization. So that the places of worship act is also something which is very relevant when it comes to the Sambal clash. So I believe that surveying thing should not be done. It should be stopped, sir. And places of worship act should be upheld, sir, in this regard. Okay, but this Sambal mosque, which is the point of controversy, Yes, sir. this is not covered under the places of worship act. Because I believe it's an ancient monument, yes, sir. Mhm. So, sir, basically, I can say, sir, history is a good teacher, but litigation on past endlessly is not a good thing. We should start. So you are saying we should not raise these kind of issues. Yes, sir. Basically, there can be some other methods, sir, to tackle these issues, such as establishment of Truth and Reconciliation Commission, which can be there, because sir, historical grievances are very many. If we go by then, sir, then it will become an endless thing, sir. This commission can look that matter once and for all, sir, and settle that particular issue. Okay, so you are saying the law and order is improving, conviction rate is double, and how about the encounter culture? How about the bulldozer action? Don't you think it is sending a wrong perception about the administrative actions? They are behaving in a monopolistic manner. How do you see in the context of civil society? So basically, if I have to talk about encounter, sir, since government is following zero tolerance policy, sir, so effective crackdown on criminals are there. So when these things will happen, so there will be more face off. So thus the incidents of encounter will increase somewhat,
though it's not a policy of the government, it happens just by chance when there will be face off. So just to protect police personnel, their life, they can they have no options left to do that thing. That's not a policy of the government, sir. Apart from that, sir, the bulldozer justice, I believe, sir, there is nothing like bulldozer justice in our Uttar Pradesh. Only the illegal encroachments which have been done, illegal construction have been done, they have been being bulldozed. And now Supreme Court has also taken matter into the cognizance, and the guidelines have been announced, and UP government is following that particular guidelines, sir. Okay, suppose you are a police officer. Yes, sir. And you have the custody of one of very famous criminal, and you get instruction from the state, from the office of chief minister, that you have to you have to do some activity which is not actually as per the constitution, like some encounter, or you have to find a way out. You have to give some message to the society that how the government is dealing with the famous criminals, and this criminal is well proven that he is a criminal and a lot of cases are against him. Everyone knows, and the society want that these people should be no more in the society. So how will you deal with the situation? How will you react to the instructions of the chief minister office? Sir, I feel that two wrong does not make one right, sir. I will try to persuade the chief minister by putting my arguments also, that it will also lead to the bad image of the government in the public, and I will try to, sir, persuade the chief minister. And the public is with the government, public perception is with the government, media is with the government, everyone is with the government. So I will try to tell the pros and cons of that particular incident to the chief minister, and try to highlight that why it's not good, and I will try to persuade them as far as possible, sir. You will try, but he will not agree, and your transfer, your promotion, everything is in the hand of the... Sir, I am ready to face the repercussions, sir, but that's a part of the service. Transfers and all these things are part of the service. So you will not agree to his instructions? Are you saying that? Sir, basically, sir, I will try to persuade him, sir, as far as possible, sir, and if I have to face the repercussion, any negative repercussions, sir, I will be ready to face that, sir. Then someone else will do your job. Sir, I will make sure that, sir, no wrong thing will happen from my pen and my gun. And for the rest, I can't say, sir, anything, sir. Okay, fine. Fine, Pratham, your interview is completed. Thanks, sir. Pratham, when it comes to socio-religious reform, you would have better structure it. Yes, sir. Social evils, you are telling social evils, but you were not able to explain any examples. Yes, sir, I will. Sir. So he was mainly focusing on child marriages. Yes, sir. Child marriage, education, caste system. So you could have only when I asked you what are the social evils, then you told. Sir, I will work on that, yes, sir. Because your school is DAV college. Yes, sir. So focus on that properly. Yes, sir. Okay, Chhatrapati Shahuji. There were two Shahu. One is grandson of Shivaji. Yes, sir. And sir, another was another one Kolhapur Shahu. Yes, so you need to explain, like he belongs to which one? After whom this university was named? Sir, Kolhapur. Kolhapur. Okay. So because you have to mention that. Yes, sir. I will add about. Okay. Yes, so whatever you told, correct only. Yes, sir. That is about yes, sir. Kolhapur Shahu. All right. Other questions, fine. Bundelkhand, you explained well. Otherwise, you are confident. Thanks, sir. Okay. All the best. Thank you, sir. Okay, Pratham. So first of all, your greeting entry is very good. Thank you, sir. Fine, and you are consistent during the interview. However, in terms of opinion-based questions, you need to work a lot. All right. So factual questions में तो ठीक है, no problem. But opinion-based questions में you have to be very very articulative. और आपको अभी clarity of thought missing है आपके, मतलब या तो आपने properly study नहीं किया है उस point of view से. जैसे संभल वाला इशू है, तो संभल वाले इशू में अब देखिए यहाँ पे पहले आपने बोला कि कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुई है. आई थिंक संभल को भी आपने काउंट नहीं किया था. It's like communal clash, not tension. But it is not a communal clash. Sambal is not a communal clash. There is no clash from the side of Hindus. Sir, it is administrative failure. Administrative failure, yes, sir. ना संबल के इशू को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए. Yes, sir. कि मतलब
इट इज ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। यहाँ पे दो एंगल हैं। फर्स्ट, द एक्शन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सर्वे, सो दैट इज एज पर द कोर्ट ऑर्डर। सेकेंड इज द डेथ ऑफ सम यूथ, so that is the administrative failure, you know? And definitely intention of the administration may not have been bad, but their management was not appropriate, you know? They were failing in the duty to protect the people's life or whatever they were doing. They were supposed to do this in a responsible manner, you know, which they didn't. Next, coming to the opinion on कि ये issues वापस से revive होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, एक तो आप खुद से मत डिसाइड कीजिए कि मतलब आपने वर्ड तो अच्छे यूज किए हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह ये सब यूज किए, लेकिन उसमें कोई आपस में सिंक नहीं बैठ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप जिस तरह से आप बोल रहे हो, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आपकी ओपिनियन क्या है, कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो नहीं। आपने बोला कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन आना चाहिए, है ना? और उससे पहले फैक्चुअली आपने ये भी गलत बता दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, वो तो यहाँ पे यूज करने का मतलब ही नहीं है। ये तो सिंपल आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड भी कर दिया अभी, और अभी मैटर सब जुडाइज है। तो अब अगर ये बात आती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इट इज अप टू द जुडिशरी, दे हैव टू सी। एंड हाँ, इफ इवन जुडिशरी इज नॉट comfortable, if judiciary is not having any base, for example in this case it is not covered under places of worship act, then we can go for some truth and reconciliation committee when people from the all religion can sit together, है ना? तो इस पे आप थोड़ा सा बता सकते हैं। एंड कमिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर, है ना, तो सिचुएशन में जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अबाउट एनकाउंटर कल्चर, है ना, तो देखिए पहली बात तो ये है कि आपको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। यू आर डिफेंडिंग द government side. Sir, you are not the government spokesperson. So basically, sir, I am getting into the bureaucracy, so how can I criticize that? No. You are getting into bureaucracy, but at the same time, you will have to have the impartial picture. Even if you are part of bureaucracy, still you have to have the impartial picture. तो इसका मतलब तो ये होगा कि कल आज ये गवर्नमेंट है, कल को दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, तो मतलब यू आर पॉलिटिकली अलाइंड। देखिए यहाँ पर मैं आपके पॉइंट समझ रहा हूँ, हमें गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में अननेसेसरली नहीं दिखाना है। मान लो उनकी कोई अच्छी पॉलिसी है तो हम उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं अननेसेसरली, है ना। यहाँ पर पॉइंट गवर्नमेंट वाला नहीं है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि जो एनकाउंटर कल्चर है उससे सोसाइटी में क्या मैसेज जा रहा है। तो पहले तो आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ ऐसी कुछ परसेप्शन बन रही है, बिल्ड हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। ये बात तो एग्री करोगे पर्सनल लेवल पे भी आप, कि मतलब पीपल मे बी हैप्पी कि डी फेमस क्रिमिनल्स आर बीइंग किल्ड, एट द सेम टाइम देयर इज एलिमेंट ऑफ फियर कि अगर ऐसा कंसिस्टेंटली चलता रहा तो अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी तो फिर कोई दूसरे लोग नंबर पे आएंगे। यस सर। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज नहीं है। यस सर, है ना। तो आप ये बिल्कुल एक्नॉलेज कीजिए और बोलिए कि अगर कहीं पे कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू इनफ टू डिस्पेल दैट डाउट दैट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट सीन इन द पुअर लाइट। और गवर्नमेंट ने उसके बाद किया है कि उसके बाद अगर कोई एनकाउंटर भी होता है तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग होती है उसकी। इनिशियली जो एक कार पलटी थी, कौन से मुझे याद नहीं आ रहा किसकी, कानपुर वालों की, हाँ आपकी विकास दुबे, है ना। और उसके बाद में एक और अतीक अहमद का भी हुआ, तो वो तो लाइव ही हुआ था, है ना। लेकिन उसके बाद में अभी एक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने रिकॉर्ड किया था कैमरे में, है ना। तो कैमरे रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, दे शुड टेक इनफ स्टेप्स टू एंश्योर दैट एनकाउंटर इज ए लास्ट रिजॉर्ट। मतलब दे शुड गो इनटू कि वाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रही है, इस चक्कर में वो लोग भाग जाते हैं या व्हाटएवर हैपेंस, है ना। तो एनकाउंटर शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर, है ना। और उसी तरह से बुलडोजर कल्चर, तो बुलडोजर कल्चर में आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ऐसी नहीं है। पब्लिक परसेप्शन देखो, पब्लिक परसेप्शन आप अगर इंडिपेंडेंटली भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उस सिलेक्टिव लोगों के ही बुलडोज किए जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोरली नहीं जा रहे हैं, बट ये तो है कि सिलेक्टिव एक्शन होता है उस केस में। ऐसे अगर लो के हिसाब से देखोगे तो पूरा शहर ही अनलॉफुल हो जाएगा, जिस तरह से हमारे शहर अनप्लान्ड वे में बसे हुए हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर मेन बात यह है कि परसेप्शन जो बन रही है सरकार के बारे में,
वो उसको ठीक करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको लैक्स होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि उनको एक्शन नहीं लेना है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, है ना। एट द सेम टाइम तरीका थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। मतलब इस तरह से आप थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप थोड़ा मिरर के सामने अपने आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। और आपकी जो स्पीकिंग है वैसे तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आप कुछ वर्ड्स मिस कर देते हो, कहीं कहीं पे ग्रामेटिकली हल्का फुल्का, मतलब अभी तो टाइम है ना आपके पास में, यू हैव 1 मंथ अप्रोक्सिमेटली ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो कहीं कहीं पे जैसे इज आप लाते हो और जहां पर प्लूरल कुछ होता है तो वहां पर इज ऐड कर देते हो, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब हल्का सा प्रैक्टिस और रिक्वायर्ड है वहां पे, है ना। जैसे आप मैडम को आंसर कर रहे हो तो वहां पर सर बोल देते हो, हाँ। और आई कांटेक्ट में आप थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो। आई कांटेक्ट में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब देखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको लगातार तीनों को देखना है। ये होता है कि आप प्राइमरली जिस मेंबर को आप आंसर कर रहे हो प्राइमरली उनको फोकस करो, और कभी कभी औरों को भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सब्जेक्टिव व्यूज आते हैं, लेकिन मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर आप आंसर कर रहे हो तो अगर आप ज्यादा आई मूवमेंट करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगा, अदर मेंबर्स को भी कंफ्यूजन होगा कि ये मुझे बार-बार क्यों नोटिस कर रहा है। उसी वजह से मैम का सर हो गया था। हाँ सर उसी वजह से मैम का सर हो गया था। हाँ, उससे आपको भी कंफ्यूजन हुआ, मैं समझ गया था कि ये इसलिए हुआ है, क्योंकि वो आप शायद उनको आपने देखा तो सर बोल दिया और उस आंसर करते करते आप फिर उधर चले गए, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अननेसेसरली, तो उसकी जरूरत नहीं है। इन बिटवीन कभी कभी देख लो, मतलब जैसे 2 क्वेश्चन के बीच में हल्का सा गैप मिला या आपको लगा कि मतलब आपके पास प्रॉपर टाइम है, उस टाइम पे देख सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन में एक बार देख लो बस, और फिर देखना है तो सबको देखो। आपने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, वो मैं समझ रहा था, कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस का मैटर है। तो मैं भी अपने काम में बिजी था, लेकिन वहां पर भी ऐसे ही होता है, जो चेयरमैन वगैरह होते हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, बट वो जब बीच में देखते हैं, अब मैं बीच में काफी देर तक आपको देखता रहा, आपने इधर 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 मुझे नोटिस नहीं किया। मतलब या तो आप मूव मत करो या तो फिर कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट वाली बात है, वो कुछ बात नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। और ठीक है, मतलब ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। वहां पे मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। यस सर। मतलब वो मेजर एरिया है जहां से आपको मार्क्स का बूस्ट मिलेगा। यस मैम प्लीज। जो आपके क्वेश्चंस थे जैसे कि गिटार से रिलेटेड, तो उनमें आंसर बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो यू कुड हैव सेड कि यू डोंट नो, बिकॉज पहला क्वेश्चन था एकूस्टिक गिटार वाला था। यहाँ तक तो आप ठीक थे कि इलेक्ट्रिक गिटार में एम्पलीफिकेशन होता है, एकूस्टिक गिटार में रेजोनेंस यूज होता है, ठीक है। और आपका तो 12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यही रहा है ना, साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट है, ऐसा भी नहीं है कि अलग से पढ़ना था। देन अगेन मैंने आपसे पूछा, फिर आपने बहुत लंबा आंसर दिया, यू वर नॉट आंसरिंग टू द क्वेश्चन कि जो पॉइंट था कि अगर उसको हम वाइब्रेट करते हैं उसकी पिच किस पे डिपेंड करती है। सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी सोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। तो आप टेंशन है, टेंशन आप एडजस्ट करते हो ना, जब गिटार प्ले करते हो टेंशन एडजस्ट करते हो तब तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। स्ट्रिंग मोटी होगी पतली होगी उस हिसाब से उसकी पिच डिसाइड होगी, वो वाली चीज़ थी। फिर भी आपने नहीं बताया, फिर मैंने आपको हिंट दिया स्टैंडिंग वेव्स के कॉन्सेप्ट का, बिकॉज हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट है तो स्टैंडिंग वेव बनती है बिकॉज फिक्स्ड रहती है आपकी स्ट्रिंग। तो पूरी स्ट्रिंग अगर एक ही एम्पलीट्यूड बनाएगी, आपका फर्स्ट हार्मोनिक रहता है, फिर आप उसको वाइब्रेट करते हो, अलग अलग हार्मोनिक बनाएगी, नोड्स एंटी नोड्स बनाएगी, तो आपके हार्मोनिक्स वेरी करते हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप 3-4 बट वो वाली चीज़ है ना, देखिए पता हो या नहीं पता हो, एटलीस्ट ये तो पता हो कि नहीं पता है, है ना। तो आई डोंट नो आपको पता था कि आपको नहीं पता है और स्टिल यू वर आंसरिंग, बिकॉज फिर वो बिल्कुल ही इंटेग्रिटी नहीं शो करता, है ना। तो मतलब हम आपके एथिक्स चेक नहीं भी कर रहे थे, फिर भी आपके एथिक्स चेक हो गए वहां पे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ मेन्स आंसर, फाइन। यहाँ पे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि नहीं पता है। ओके, पेट्रियार्की के में आप और इलेबोरेट कर सकते हो, आपका तो सोशियोलॉजी है, पेट्रियार्की के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, और स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल डिसमेंटल कैसे कर सकते हैं पेट्रियार्की,
तो इसका एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए. देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना, कि फैमिली में डिसमेंटल करना, सोसाइटी में डिसमेंटल करना, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेशन में डिसमेंटल करना. इवन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का सिर्फ यही नहीं है, ओवरबर्डन ही नहीं है. देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ना, कि अग्रेसिव बिहेवियर चाहिए, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते फॉर मेन. ओके, मेस्क्युलैनिटी शो करनी पड़ती है, विच समटाइम लीड्स टू टॉक्सिक मेस्क्युलैनिटी. तो पेट्रियार्की का इम्पैक्ट मेन पे भी उतना ही है. सो यू हैव टू बी इलैबोरेट ऑन ऑल दीज थिंग्स, नॉट ऑन द फैक्चुअल क्वेश्चंस कि उसमें इलैबोरेट करते जाएं. फाइन, ओके. सो कॉन्फिडेंट आप हैं, है ना, ample amount of confidence है, but you should know where you don't know. Okay, and acknowledge that I don't know. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. फाइन, ओके. और एक पॉइंट और भी है कि जो आप जिससे स्माइल करते हैं तो मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्माइल का थोड़ा ध्यान रखना है आपको. कहीं कहीं पे कोई अगर सिंसियर मैटर होता है तो वहां पर आप स्माइल को अवॉइड कर सकते हैं. हाँ, ठीक है. हाँ, और एक क्वेश्चन और भी मुझे याद आया जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस वाला था. तो वहां पर आप ये तो बोल रहे थे कि मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, जस्टिफाई करूंगा, तो लेकिन आपने वहां पर क्लियरली ये नहीं बोला कि मैं इसको करूंगा ही नहीं. आपको स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए कि आई विल नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड आई विल कंप्लीटली डिनाई एंड आई विल फेस द रिप्रिकॉशंस. सो आपको मतलब क्लैरिटी, आपका जो ओपिनियन, जो भी आपका पॉइंट है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. यस सर, ओपिनियन. हाँ, मतलब आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए, जो कि नहीं लग रहा था आपके आंसर में. वो मुझे बार बार पूछना पड़ा कि आप करोगे कि नहीं करोगे. मुझे क्लैरिटी नहीं है कि आप मतलब आप ये तो कह रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैं नहीं करूंगा इस चीज को. वो मुझे क्लैरिटी मिसिंग थी उसमें. ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में काम कीजिए. रेगुलरली कम से कम 200-300 क्वेश्चन निकाल लीजिए ओपिनियन बेस्ड जो भी हैं, और वहां पर अपने स्टैंड पहले क्लियर कीजिए. उसके बाद में उसको सबस्टेंशिएट कीजिए, अपने आर्गुमेंट्स को कीवर्ड्स के साथ में सबस्टेंशिएट कीजिए. जिसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को. यस सर, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, अदरवाइज तो आपकी यंग एज होने की वजह से आपको एडवांटेज मिलेगा. क्योंकि यंग एज होने पे अगर आपको कोई फोल्टर नहीं होता है तो 180, 90 ऐसे दे देते हैं वो लोग. यस सर. अगर आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे अच्छे निकल जाएं तो आपको 200 प्लस भी मिल जाएंगे. तो बन जाओ IAS, है ना. ठीक है, और बताइए सर. बस यही सर. हाँ, तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन आंसर की स्लिप बना लो, कुछ इस तरह से कर सकते हो. जैसे A4 शीट होती है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो. सर, ये जैसे होती है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया आपने, और उस पर क्वेश्चन लिख लिया, स्पेशली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. और इस तरह से आपने जितने भी आपके डैफ से संबंधित हैं या जो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले क्वेश्चन बना लिया आपने हर टॉपिक के ऊपर. फिर उसको कैटेगराइज कर लिया कि ये स्टेट के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर है, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर है, सोशल इश्यूज के ऊपर है. और फिर आपने एक कैटेगरी ली और उसको मिरर के सामने ले आकर के क्वेश्चन कोई भी रैंडमली पिकअप किया और उसको आंसर किया अपने आप को. तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद ही क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी. यस सर. और उसी स्लिप के बैक साइड में उसके मेन पॉइंटर भी लिख लो कि आप क्या क्या वर्ड्स यूज करोगे, क्या क्या फैक्ट्स यूज करोगे, आपका स्टैंड क्या है. और अगर बाद में कुछ आपको और बेटर लगता है तो उसको भी आप उसमें ऐड भी कर सकते हो, अपने स्टैंड को चेंज मतलब डिफाइन भी कर सकते हो. यस सर. तो ये पॉइंट है. ठीक है. यस सर. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट प्रथम. वो वाले क्वेश्चन में, एनकाउंटर वाले क्वेश्चन में एक्चुअली स्टैंड इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है. आपने रूल ऑफ लॉ जैसे वर्ड का कभी यूज ही नहीं किया. जुडिशरी का एक जुडिशियल जस्टिस सिस्टम होता है, वो ऑपरेशनल होना चाहिए. पब्लिक क्यों डिमांड कर रही है कि एनकाउंटर हो जाए, या मॉब लिंचिंग जैसी चीजें क्यों हो रही है, इंस्टेड जस्टिस हम क्यों डिमांड कर रहे हैं. प्रोसीजरल जस्टिस है होना ना, चाहिए. तो प्रोसीजरल जस्टिस होना चाहिए और उस पर लोगों को बिलीव होना चाहिए, वो अच्छे से चलना चाहिए. तो ना ही यहाँ पे लाइक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बीच में आना चाहिए, ना ही ब्यूरोक्रेसी बीच में आना चाहिए. सब अपना काम करेंगे तो जस्टिस वैसे ही डिलीवर होएगा. हाँ, इसमें थोड़ा और डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो. जो फैक्ट्स जैसे मैंने बताया था कि पब्लिक भी डिमांड कर रही है, ऑलरेडी वो सबको पता है कि क्रिमिनल है ही वो, तो उस तरह की जो मैडम ने बताई वो भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो. यस सर. यूपी से अगर है ना, तो यूपी वाले चीज को सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. यस सर.
सर। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? सर आपने इससे पहले मॉक दिए होंगे आई थिंक Yes, एक sir. दो। दो मॉक। अभी मॉक देने से ज्यादा पहले तैयारी पे फोकस करो। Yes, sir. ज्यादा मॉक देने से फायदा कुछ नहीं होगा, मतलब दैट्स योर चॉइस, आपको कितना देना Yes, है। sir. बट अभी आप पहले अपनी आर्टिकुलेशन और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करो, फिर एक हफ्ते बाद इंटरव्यू दो। मतलब बहुत ज्यादा मॉक का कोई फायदा नहीं है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगर जरूरत होगी तो फिर से एक बार दे देना यहाँ पे हमारे पास में। Yes, sir. उससे क्या होता है कि जजमेंट, फेयर जजमेंट हो जाता है कि हाँ, पहले आपका क्या स्टेटस था, आप क्या स्टेटस है? अभी क्या स्टेटस है। Yes, sir. फरवरी में सर दे दीजिए। हाँ, फरवरी में आप कर लीजिएगा अरेंज एक बार और Yes, फिर sir. से। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। Thank you, One sir. more thing is when you came and you sat, तो आप इस तरीके से थोड़ा बार बार एक पेंडुलम स्विंग टाइप का मूव कर रहे थे। ओके, तो एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बट समटाइम्स वो एनर्जी बिखरी बिखरी दिख रही है। Yes, sir. तो यू हैव टू थोड़ा सा आप अपने आप को मैनेज करो, है ना, क्योंकि ये चीज़ों में अभी आप प्रैक्टिस करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, Yes, sir. है ना। Yes. बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है अपनी पर्सनालिटी को, बिकॉज एक्सप्रेशन अच्छा है, बट ये मूवमेंट ना आपका हो। ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब पोटेंशियल बहुत अच्छा है, सब कुछ इनहेरेंट वाली सब चीजें अच्छी हैं। जो भी चीजें हैं वो सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस से वो सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, मतलब Yes, sir. क्योंकि इनहेरेंटली कोई इशू नहीं है। Yes, sir. सर वैसे कोई सर मेरी अचीवमेंट्स नहीं है सेक्शन 7 में, से कोई दिक्कत हुई है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं है। अचीवमेंट कुछ नहीं है, आपको तो अपनी पोटेंशियल दिखानी है। Yes, sir. अचीवमेंट तो एक मतलब ऐसी चीज है ना कि जो उसका आप जो भी है ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। आप कम से कम झूठ नहीं बोल रहे हो। आपका जब मैंने ये देखा तो मुझे ये है कि यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन, कि आपने झूठ फालतू का नहीं भरा। फालतू जो होता है ना कि हेड गर्ल हेड बॉय ये वो सब भर दो। Yes, sir. तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है आपका। हाँ yes, sir. हाँ पॉजिटिव में भी हो सकता है। हाँ, Yes, sir. और बताइए। सर बस यही एरियाज थे सर। ठीक है जी प्रथम, ऑल द बेस्ट। Yes, sir. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you, sir. वेलकम।